यहाँ पर नजर आ सकती है। तो चलते हैं, बड़ी भिड़ंत की हमने बात की, तो इस भिड़ंत को आप क्या कहना चाहेंगे? समय है हमारे बीच में हमारी सर्वप्रथम टीम को इनवाइट करने का। सो लेट्स इनवाइट काजीरंगा राइनोस। और चलिए, अब समय है यहाँ पर हमारे बीच में दूसरी टीम को इनवाइट करने का। सो लेट्स इनवाइट पंचाला प्राइड। तो चलिए, स्वागत करना चाहेंगे एक बार फिर से हम आप सभी का फैन कोर्ट पर। काजीरंगा राइनोस की बात कर लेते हैं। काजीरंगा राइनोस यहाँ पर तैयार है अपने स्टार्टिंग 7 के साथ। प्रतीक भैया मैन टू वॉच आउट फॉर निश्चित तौर पर होंगे। मोहित, कुलदीप और नवीन नरवाल, कुछ बड़े नाम यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं कवर डिफेंडर की पोजीशन में। और आज रजनीश नरवाल को वहाँ पर मौका है। मनु वहाँ पर रेडर में आपको मौजूद मिलेंगे। हितेश कादियान और मोहित नरवाल, यानी कि यहाँ पर एक थोड़ा सा बदलाव आपको नजर आएगा काजीरंगा राइनोस में। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा नवीन, बहुत सारा स्वागत है आपका। और काजीरंगा राइनोस की भी हम बात करेंगे, पर पंचाला प्राइड की पहले। चलिए, पंचाला प्राइड की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग 7 की। सुमित यहाँ पर आपको नजर आएंगे, रोहित यादव आपको नजर आएंगे, अमित नागर मौजूद मिलेंगे, मोहित मौजूद मिलेंगे, मनीष गुलिया, प्रवीण, नितिन सिंह। और अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो अजय मोर को आज स्टार्टिंग में मौका नहीं मिला है। सावन, संदीप, दीपांशु और अमन एक अच्छे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भी आपको वहां पर नजर आते हैं। तो नवीन, एक बार फिर से आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। Yeah, Harshit, both the teams looking a little different, especially Kaziranga Rhinos trying to get in a few new players, few new skills and strategies coming in. They're trying to get that winning combination going for themselves, because the last match what they won against the Arrows was a big confidence booster for the Kaziranga Rhinos. But Panchala Pride have lost to Muttal Magnets in their previous match. So this starting 7 will be trying to stop the Kaziranga Rhinos, because this is the fight for the 6th place. Mind you, it's very, very important, because the bottom place is now up for grabs, because Panchala Pride have been placed 6th on that points table, and only 16 will go through to the challenger round. And this man, Pratik Bhaiya, will be very, very important in making sure Kaziranga Rhinos get on to that 6th place, because right now they are in the 7th, but 222 on his back. He will not be letting this go very silently, as Ashish Narwal has today once again overtaken him with a lot of points. But on the other hand, Manish Gulia has got a lot of support, but I am really concerned to see that strike rate. It's just 63.11. It is not what we want for a strike rate from any team. Of course, he's got in good support from Mohit Kumar, and today he will be also supported very well by Sumit. But actually, talking about the performances of these teams, before that we'll also just conclude on the toss, which was won by Panchala Pride, and Manish Gulia actually selected the court that they were standing in. But talking about the performances of this team, it's somewhere it's like not been very balanced for both the teams. Both the teams have struggled in this Yuva Kabaddi series. बिल्कुल सही कहा नवीन आपने। और चलिए, थोड़ी सी नजरें बना भी लेते हैं जब आपने बात की यहाँ पर दोनों ही टीम्स की, जिस तरह का खेल का प्रदर्शन आप काजीरंगा राइनोस की सर्वप्रथम बात करते हैं। देखिए, 14 मुकाबले वहां पर खेले हैं और अभी भी जीत 7 है, क्योंकि सर्वाइवल राउंड इनका बहुत अच्छा रहा था। और लॉस में जो आपको 6 नजर आएंगे वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे बूस्टर राउंड में, उसमें 5 हार है। यानी कि काजीरंगा राइनोस की आपने बात की तो 7 जीत और वहां पर कुछ हार। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं नवीन पंचाला प्राइड की, तो आप इनके खेल को किस तरह से देखते हैं? See, that's what I said, wherein in the 14 matches, they have looked very good in patches, but the patches has come only from Manish Gulia, this man, number 19 on our jersey. But what is really important is for the defense to come along together. Will they come along? Let's see after this countdown.
71st match, and it is the fight for the last place in the bottom there in the booster round. And from tomorrow, the second leg of the booster round, that's the double round robins leg, will start from tomorrow, as the raid will happen from the right to left of our screen. And it is the big rhino Pratik Daya walking into the Kaziranga Rhinos. और आज जिस तरह से नवीन हमने दोनों ही टीम्स के बारे में बात की कि थोड़े से यहाँ पर आपको बदलाव नजर आए, और प्रतीक दहिया में भी वो कॉन्फिडेंस में बदलाव नजर आएगा, वो आत्मविश्वास झलकता हुआ नजर आ रहा है नवीन। बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनकी फेस लैंग्वेज देखिए, क्या लाजवाब रनिंग हैंड टच किया है यहाँ पर। Also Nitin, who wouldn't have faced Pratik Daya ever in a match. Nitin somewhere comes in as a new surprise for Panchala Pride on that right corner. He did not go back in time and he did not gauge the speed of Pratik Daya. Now it's Manish Gulia. और ये भी बतौर रेडर लेफ्ट और राइट में जाने का निरंतर प्रयास करते हैं। क्या मनीष गुलिया की भी एक बहुत ही शानदार शुरुआत होते हुए नजर आएगी। दोनों ही टीम के मेन रेडर्स अपना पहला पॉइंट यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। ये संकेत अच्छे हैं, और नवीन क्या है, यहाँ पर आपको दो अच्छे रेडर्स के बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। Very well, has to be, isn't it? Because this is going to be a contest for that last spot. But I was somewhere not happy with Naveen Narwal in that left cover on the previous occasion. Now a running hand touch by Manu, and what a support that he's come out to be for Pratik Daya. Look at his speed and go towards the left flank and attack the left in defender. That was beautifully done. But will Rajesh Narwal do the same thing? In fact, is the big question for Pratik Daya. But on to the Panchala Pride, it is going to be very important for the defense to hold on to their nerves, because Pratik Daya has got both of them, Rajesh Narwal and Manu, both in support. But who will be supporting Manish Gulia is a big question, as there's another empty raid. Yeah, as I was talking about the performances, you said only top two raiders are fit. Yes, but I am more concerned about Manu and Rajesh Narwal supporting Pratik, and Manish Gulia, I'm still to see that one support raider for him. क्या वो सपोर्ट रेडर मोहित कुमार नजर आ सकते हैं? जरूर पिछली रेड में गए थे प्रतीक दहिया, इस बार रेड में जरूर मौजूद है। और ये है विषय, ये है एक लगातार बड़ा विषय जहां पर पंचाला प्राइड लैग करता हुआ नजर आ रहा है नवीन। एक बार फिर से कॉर्नर से गलती वहां पर नजर आई, शायद वहां पर लेफ्ट कॉर्नर में परवीन मौजूद थे। इस तरह से आप एडवांस जाकर बैक होल्ड नहीं कर सकते हैं। And Sundaram, the assistant coach of Patna franchise, is along with us, and thank you so much that he's been alongside from yesterday and watching all the proceedings. So this is nice as a boost that comes in the booster round for this Yuva Kabaddi lads. But talking about that back hold, and Manish Gulia goes in very deep towards the right flank. I guess he will go back empty-handed. What Parveen also did was, he was in dual mind. He did not go for the back hold very strongly with a single mind frame. He just went in, tried his hand, that's all. That trying is not efficient against Pratik Daya, as Manu once again comes in. और देखिए, इनकी भी आपने बात की स्पीड की, तो स्पीड बहुत अच्छी है इनके पास। देखना होगा एस्केपिंग स्किल्स में क्या क्या मौजूद है। जरूर इन्होंने दर्शाया है कि एक अच्छा साथ दे सकते हैं प्रतीक दहिया का, और एक अच्छी खोज भी आपको नजर आ सकती है नवीन कि देखिए। परंतु इससे पहले डू और डाई रेड है, मोहित कुमार डू और डाई रेड में। क्या लगता है नवीन, इस बार क्या सपोर्ट दे पाएंगे मनीष गुलिया को और पंचाला प्राइड को मोहित कुमार? He is confident of the bonus though, the pack house, but on a do or die raid, I will not be very relying on the bonus line. I will go in and confidently get the touch point under 9 seconds. 8 now. He has to go in deep and right. Cover comes across. Tackling and taken care of, and he stuck the midline only. He's not crossed it. Yes, that is what Mr. Sundaram is also saying. Oh, he's got the bonus. Look at that. He's got the bonus. But the support came in so nicely, and then the middle line was stuck. It should cross. The midline should be crossed by the defender. It was so close. Yeah, just talking about support. Mohit looks like one to give a good support to Manish Gulia. I am now little confident about Mohit Kumar after that race. और जैसे कहा जाता ना, if you want to be in the grid, then you have to be cross the midline. और इस बार भी ये देखिए नवीन, ये कबड्डी का खेल है, जैसे को तैसा यहाँ पर शायद नजर आया है। देखिए आप, पिछली बार शायद वहां पर मोहित कुमार ने मिड लाइन टच की थी, क्रॉस नहीं की थी। इस बार बड़े क्लोजली प्रतीक दहिया ने भी मिड लाइन को टच किया, परंतु क्रॉस नहीं कर पाए। ये है सेंटीमीटर का खेल। Full mark for Amit Nagar,
there because he was so very strong in that ankle hold. He did not allow Pratik to even free his legs even on the turn. See, generally what happens, Pratik has shown us, when he turns, he generally frees his legs. So Amit Nagar coming in as a left cover defender today for Panchala Pride has given that all-important tackle for putting off the biggest rhino off the mat. And once again, you see the empty of the Nitin had gone in to put in that empty raid. जी आज बहुत सारी जिम्मेदारियां वहां पर नितिन पर होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, पिछली बार एम्प्टी रेड के लिए गए थे, परंतु मनु बतौर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। जिस तरह से जंप लिया, यस नवीन देखा जिस तरह से यहां पर जंप लेते हुए नजर आए, बहुत ही अद्भुत। The jump, and more than the jump, see, it was not even there for the defender to go in and attempt. So that is what the defense of the Panchala Pride should somewhere try and hold back. Sumit now will play on the block line. See, playing on the block line, Kaziranga Rhinos are not bothered. It's when you go inside, when you just go inside under these 10 seconds, back kick, not effective. You'll have to go back empty-handed. So just a slender lead, 2-point lead. And we've crossed almost 6.5 minutes in this game when we have begun. And it is nice to see where the Panchala Pride is trying to hold on against Pratik Daya. They're not going in with heap of points. They're not letting him run away with the game. And that is not nice if Kaziranga Rhinos want to come back on this match. And look at this. The swift turn. The idea was right by Nitin. All marks to him. He's played in all the positions, Archit. I'm a little confused of what he is in the team today, because he's supposed to be starting him from that right corner, but then now he's gone to the left corner position. And then when he was raiding, after he came back off the raid, he was playing in the middle position. Yeah, we'll have to figure that out. But now a do-or-die raid for Manish Guria. बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए अभी मनीष गुरिया यहाँ पर रेड पर है। नितिन सिंह का वो सपोर्ट लगातार देखना चाहते हैं और लेफ्ट में इस बार क्या शिकार बनाएंगे, क्या बोनस की भी मांग की है। और जी हाँ, मल्टीपल रेड पॉइंट यहाँ पर नजर आएगा। The ankle hold once again, not on the right time, and the right corner has to go back. And once again, Hitesh is that man who is making a real issue out of that right corner, because the regular defender Hardeep, I guess, of Kaziranga Rhinos is somewhere missing, and Hitesh is trying to fill in his boots from yesterday and from the last match. Kaziranga Rhinos have got a little effort going on to that right corner, but then the left corner of Panchala Pride has no issues this time. Parveen puts a strong tackle. और देखिए जिस तरह से यहाँ पर डाइव लगाई, जिस तरह से यहाँ पर सिंगल थाई पर जाकर डाइव लगाई, बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। तो नवीन, आप बिल्कुल आपने जिस तरह से शुरुआती समय में बात की कि आज पंचाला प्राइड बहुत ज्यादा टूट कर नहीं पड़ रहा है, ये अच्छे संकेत है प्रतीक दैया पर, और कितना ज्यादा आवश्यक है दोनों ही टीम्स के लिए, बतौर रेडर बतौर डिफेंडर, की आप अपने नर्व्स को होल्ड रखें शुरुआती मिनटों में और मुकाबले को बराबरी पर चलने दें। But this tackle from the Kaziranga Rhinos defense, somewhere Mohit Kumar tried too much, was not required to go in and try so much against that right corner. And once again it's Rajneesh Narwal who was being that right-hand defender. So I should be calling the in positions as defenders now, because all the teams are trying to make sure that the defensive position is also from the in position. And Manu will be trying his best, because only 1 point lead and Kaziranga Rhinos will not be comfortable. But the defense has played well today, Harshit, for the Panchala Pride. बिल्कुल आपने सही कहा कि पंचाला प्राइड का डिफेंस आज उस तरह की गलतियां दोहराना, और हमने लगातार जिस बारे में चर्चा की है नवीन की, अगर आप गलतियों से सीखने में आपको समय ले सकता है, परंतु आप यही चाहेंगे कि आप गलतियों को दोहराएं नहीं, और शायद आज पंचाला प्राइड ये करते हुए नजर आए कि वो गलतियां दोहराएंगे नहीं। और 31 नंबर जर्सी की हमने बात की, सुमित लगातार सपोर्ट करना चाहते हैं और ऑफिशियल टाइम आउट यहाँ पर जरूर लिया गया है। और नवीन, आपने जिस तरह से कहा कि 1 पॉइंट की लीड है काजीरंगा राइनोस के पास, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल होंगे नहीं। किस तरह से आप इस मुकाबले को देखते हैं नवीन? आज दोनों ही टीम यहाँ पर जीत सुनिश्चित करना चाहती है। पंचाला प्राइड जरूर थोड़ी सी आपको उनका मनोबल थोड़ा डाउन नजर आएगा, और काजीरंगा राइनोस पिछली जीत के साथ आई है, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको क्या हाई नजर आएगा? See, more than the confidence from the previous matches, right now I guess Panchala Pride will be a little confident, because they have nabbed Pratik Daya for more than 2 occasions.
So what will that give is Monu has to do a lot of raiding. In fact, Manu has to do a lot of raiding. So when Manu is raiding, and this kind of point will increase Manu's confidence, because Panchala Pride have planned very nicely for Pratik Daya, no doubt. But a big tackle on the kick. When the raider is kicking, Rohit Yadav cannot have an ankle hold coming in during the kick, because the momentum is with the raider to go towards the midline. So yeah, this is where I'm seeing the Panchala Pride defense should come together as Manish Gulia once again takes a couple of points, bonus points. अग्रीड। और क्या आज मनीष गुलिया अपने लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और अपनी टीम के लिए भी। हमने पिछले मुकाबले में भी जब बात की थी कि जब मनीष गुलिया अपने आप में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लगातार पॉइंट्स लेकर आएंगे नवीन, तो अपनी टीम को अच्छी तरह से लीड भी कर पाएंगे। जरूर हमने जिस प्रकार पर लगातार चर्चा की थी कि कप्तान के लिए, खिलाड़ी के लिए कितना आवश्यक हो जाता है अच्छा प्रदर्शन करना और अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट लीड करना। Oh, very much, because you can walk the talk, isn't it? Because if you can't control your team, the team will come back and say, "Arey, तूने क्या किया इस मैच पे?" But they might not say it on the face, but they will be thinking inside, saying, "अरे चलो इसने कुछ नहीं किया." लेकिन now Mohit Kumar has been napped down and he went in straight towards the left corner and did not have any way to get escape. Mohit Narwal once again, look at that, on that left corner position. He was so properly placed against the raider in front of him, and that's why the tackle was successful. Now it's a super tackle situation, Harshit. सुपर टैकल ऑन है, बिल्कुल आपने सही। डिफेंडर्स में कौन कौन मौजूद है वहां पर? नंबर 5 जर्सी की हमने बात की, निश्चित तौर पर यहां पर प्रदर्शन करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए बेहतर पंचाला प्राइड। लगातार अमित नागर एक अच्छे डिफेंडर जरूर हैं और थोड़ी सी जाकर मनीष गुलिया को बताया भी है कुछ कि, और शायद एक क्या सब्स्टिट्यूट किसमें आपको नजर आएगा, क्या पंचाला प्राइड या फिर ऑफिशियल टाइम आउट आपको नजर आ सकता है। थोड़ी सी वार्तालाप। और यहाँ पर शुरुआती फेजेस में हमें देखने को मिला है कि दोनों टीम के कोचेस, दोनों ही टीम्स अपने आप में जानती है कि इस मुकाबले की महत्वता कितनी है। जिस तरह से हमने मुकाबले की शुरुआत में बात की थी कि लास्ट डे है फर्स्ट लेग का। See, Manish Gulia now will have to go in and get in. So, बोनस तो बनता ही बनता है, लेकिन उसके ऊपर अगर एक सोनेहा का ना मिल जाए तो that is like on getting a touch point. Yeah, this is nice, but it is not his brilliance. It is the big tackle that is coming in from Naveen Narwal, and he's looked so good, but it was very advanced. He went in against the side, I should say, because it was already decided by Manish Gulia that he will go without the point. But now it's a do-or-die raid and he cannot go without the point here. Pratik Daya is under pressure. और वैसे भी 4 के हाउस में पॉइंट लाना मुश्किल होता है 1 वर्सेस 4, परंतु जब तक मुश्किल नहीं होता है तब तक प्रतीक दहिया जैसा खिलाड़ी हो, और शायद यही समझाते हुए आपको स्क्रीन पर नजर आए। जिस तरह से देखिएगा, जिस तरह से अपने आर्म को स्ट्रेच करते हैं, और जो आपने पहले भी बात की थी कि नितिन का आज रोल एक बार फिर से शायद उन्होंने स्टार्टिंग 7 में राइट कॉर्नर के तौर पर शुरू किया था, बीच में वो आपको लेफ्ट कॉर्नर खेलते हुए नजर आए, उसके भी बीच में आपको रेड करते हुए नजर आए, फिर से भी राइट कॉर्नर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो नवीन, क्या इसके पीछे एक लक्ष्य हो सकता है टीम का? See, you are trying to confuse the raiders of the opposition team, but somewhere you'll have to be very clear of plan A and plan B. And I am thinking for Nitin, it is plan A, B, C, D, and he is thinking of which plan to choose and select. So that should not be happening. As once again, it's a super tackle situation, and Panchala Pride, if they can nab down Pratik Daya, there is 2 points for the taking. If less than 3 or less than that defenders will nab down a raider, you will get 2 points. All chances that Pratik Daya also will get 1 point, and he will get more than 1, I guess. Kaziranga Rhinos, Yeah. number 6 or 5. और वहां पर शिकार बनाया, जिस तरह से देखिए पहले किक लगाने का प्रयास किया, परवीन को हैंड टच लगाने का प्रयास किया उसके बाद, और जानते थे कि अमित नागर वहां से डैश के लिए या फिर डबल थाई होल्ड के लिए वहां से जरूर आएंगे, और जिस तरह का वो मोमेंटम को लेकर जाते हैं मिड लाइन पर, जो फोर्स के साथ जाते हैं, जो शक्ति के साथ जाते हैं, और जो उनमें वो तेजी नजर आती है, वो सच में बहुत ही अद्भुत है। अब मनीष गुलिया लास्ट मैन बचे हैं कोर्ट पर अपनी टीम के लिए, रेडर जरूर है, पॉइंट लाने का भी प्रयास करेंगे, रिवाइवल की आवश्यकता होगी।
See the way the defense is playing so way behind the bonus line. Yes, he's got the bonus. 5 seconds to go. He tries his best. Defense holding on to their horses. They are not letting the Rhinos go up. And then Manish Gulia surrenders. The last second where Hitesh actually now gets a point. And if such things keep happening against the Panchala Pride, Kaziranga Rhinos will be back on top of this match very, very soon. Now it is not a big lead, but 5 points for Kaziranga Rhinos will try and say that, okay, now let's hold on to this. Let's hold on to this lead will be the discussion as Manu comes into raid. And also, Harshit, it's a good initiation by the think tank of Yuva Kabaddi series that there is also a cash prize for teams finishing in 1, 2 and 3. So it is just not getting through to the challenger round. You can also make sure if you are number 1, 2 and 3 placed on the booster round. From tomorrow the double round robin is going to start from the booster round. The second leg of the booster round is starting. So if you are finishing 1, 2 and 3, you are also awarded with extra cash prize. That's a good initiative. That's a very good initiative. Arshit, I guess you'll have to write an application and say, okay, right, what's there for the commentators? यस जरूर मैंने देखिए पेन हाथ में ले लिया था, मैं एप्लीकेशन लिखने के लिए जस्ट रेडी था और बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। और देखिए कितनी मोटिवेटेड है। अगर हम उस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जरूर प्रतीक दैया इस बार ज्यादा अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, बोनस पॉइंट अच्छी तरह से लिया है। कितनी अच्छी एक मोटिवेशन के तौर पर लिया जा सकता है कि आप किस जुनून के साथ भारत की जो अपनी मिट्टी का खेल है उसमें आप प्राथमिकता दर्शाएं, उसमें आप अच्छा खेलिए, तो कितने अच्छे अंदाज से एक मोटिवेशन के तौर पर सभी टीम्स के लिए है कि आपको टॉप 3 में अगर आप समाप्त करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा कैश प्राइज भी आपको मिलेगा। तो इससे क्या एक ये लड़ाई भी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि 1, 2, 3 में रहना भी एक अच्छा संकेत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। Yeah, very much required, isn't it? Because when you know that you are going to the challenger, to finish on the 1, 2 and 3, it is very, very important. And now it is also supported by a cash prize and another weak tackle from right cover. Jersey number 5, Otage. और एक बार फिर से शिकार बनाया है। देखिए जिस तरह से जो लगातार आप चर्चा कर रहे हैं नवीन, बिल्कुल आपने सही कहा कि पंचाला प्राइड का डिफेंस शुरुआती मिनटों में जरूर गलतियां करते हुए नहीं नजर आया, परंतु हमने लगातार पंचाला प्राइड से देखा है नवीन कि वो कुछ मिनट्स के बाद जैसे जैसे सेकंड हाफ पास आता है वैसे वैसे गलतियां करना शुरू करता है। और इस बार बैक होल्ड, ये लीजिए आप, एक और लाजवाब बैक होल्ड नजर आएगा काजीरंगा राइनोज। ये राइनोज आज सर चढ़कर बोल रहे हैं, ये दमखम दर्शा रहे हैं अपना और पराक्रम का प्रदर्शन दर्शा रहे हैं। See, more than Parakram and Damkram, what happened there on that right corner was Mohit Narwal got a completely blinded angle of the Raider. So what just happened there was no lateral movement of the Raider where he did not have an eye on Mohit Narwal, and when he was shifting his focus towards the left cover, and I will give full marks there once again for Naveen Narwal, who actually went in and blinded the Raider, and that is what Mohit Narwal sneezed on that opportunity, I should be saying. In fact, I guess it's Hitesh there. Correction, yeah, number 3 jersey, it's Hitesh going in with that back hold. So that is full mark for Naveen Narwal to blind out the Raider. See, this is what he was supposed to do, and now Manish Gulia. That is the difference between two Raiders who know how to go through the midline on a lateral movement. Look at that. It has to be somewhere, you know what, Hafid? Have you seen... okay, I'm not comparing this with any Raider, but I'm just comparing the skill of an animal, which is very, very important for a Raider. Have you seen chameleon? Yes, Naveen, yes. Yeah, so for chameleon, it can actually rotate the eyes on 360 degrees. And now a double ankle hold, but he will be struggling, the big rhino, but no, he has to go back. 1 point, Panchala Pride. Rajesh Narwal, in fact, correction, Mohit Kumar there, going in with a double thigh hold, and yes, he gets it very, very correctly on Pratik Daya. Yeah, so just talking about that chameleon, where it actually can see at 2 directions at one end. Of course, it's very difficult for a human being to do that, but for Raiders, it is so important, and that was shown very cleanly when Manish Gulia was raiding, and now Mohit Kumar is raiding. See what happens. He has to have one eye on the left corner, then he has to go back towards that right corner and then say, okay, even you are away from me. If that doesn't happen, you get blinded.
और क्या खूबसूरती के साथ नवीन आपने इस बात को यहाँ पर बतलाया है हमारे सभी दर्शकों को कि रेडर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है अपनी दोनों आंखें चलाना। जिस तरह से यहाँ पर कवर के खिलाड़ी को क्या शिकार बनाते हुए नजर आएंगे मनु। और नवीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी शायद कैमिलियन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखें भी देखिए लगातार वहाँ पर पूरे मैट में लगातार घूमती रहती है और आप बड़ी बारीकियत से बता देते हैं कि यहाँ पर ये छोटी सी चूक और अच्छी तरह से रेडर कर सकते थे। मुझे लग रहा है कि नवीन, but I'm not a good raider, but I'm really not a good raider, Arshit. I was a good defender. I was really not a good raider, so I do not have that quick movement of the eyes. I will go ahead and accept that. But see, what is there in raiding is I guess it's that two important skills of having the speed and having that escaping knack. That is very important. See, I understand when you have the speed, the touch point taking ability will come in naturally attached with that. Of course, yes, the toe touch, running hand touch, the flying or the diving hand touch, everything is there in the skill of the speed. But then more importantly, you need to have the escape route. It's like you cannot be an Ekalavya when you go into the opposite court to raid. You need to be Arjuna. You need to go attack, and then you also need to plan out your return route. Sometimes I've seen raiders only behave like, in fact, Abhimanyu, where he is going in and taking up everything and then getting stuck in the Chakravyuh. That should not be happening. As Manish Gulia now is going to be Abhimanyu or Arjun is a big question on a do-or-die raid. Will he make something out of this? It's the last raid of the first half. He is being really patient until now. Goes in and then that's the Chakravyuh. That's a proper Chakravyuh coming in, and अभिमन्यु एक मतलब क्या बोलते हैं, वीर की गति प्राप्त कर ली उन्होंने। और देखिए चारों खाने चित किया वहां पर। बिल्कुल आपने सही तरह से समझाया कि कभी कभार रेडर अपने आप के लिए वो चक्रव्यूह बनवा लेते हैं। इस बार देखिए मनीष गुलिया प्रेशर में आ गए थे, वहां पर बहुत ज्यादा अंदर बिल्कुल मिडल में जाकर उन्हें टच करने का प्रयास किया, और जिस तरह से आपने बताया कि वो चक्रव्यूह में फंसते हुए चले गए और जिस तरह से अभिमन्यु नहीं निकल पाए थे चक्रव्यूह से, इस बार मनीष गुलिया नहीं निकल पाएंगे। परंतु देखिए महाभारत आपको मौका दे या ना दे, जिंदगी आपको मौका दे या ना दे, कबड्डी के मैट पर आपको दूसरा मौका मिलता है। ये देखिए कबड्डी का खेल आपको जीवन में भी कितने सारे आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर थॉट्स देता है, वो प्रैक्टिसेस देता है। Very much, really nicely said. Yeah, only I guess in Kabaddi, apart from any other sport, and of course in a test match, apart from a test match or a Kabaddi, you will get another chance in the same match. So that is where you'll have to come back very strong. And look at this. This was very, very unlucky, I should say. You're just touching the midline, and even Patrick Dhaya was unlucky there and just touching the midline and not crossing it. But lucky to the defenders that nothing went against them on both the occasions. But talking about the second chance, I am now feeling even for the Panchala pride, it's going to be tough, even coming in the second half, to stop the Kaziranga Rhinos. Because for the very first time in this whole boost around, I guess the Kaziranga Rhinos have got such a big lead in the first half. And Patrick Dhaya is back in the same colors that we have always watched him and enjoyed him to do. So today it is going to be tough for Panchala pride. I'll not say it is never going to happen, but it is tough. Why I'll say it's not going to happen is because I am seeing Mohit Kumar raid in nicely. I am seeing Amit Nagar with a good tackle. I am seeing Nitin and Parveen put up nice tackles. Even if it's just 3 tackle points, I am seeing that intent is right. So let's slip into a short break or sit here, and we'll come back soon and the second half resumes. तो 21-13 से यहाँ पर काजीरंगा राइनोज ने एक शुरुआती हाफ में यहाँ पर 8 पॉइंट की लीड बनाई है। वो निश्चित तौर पर इसे कंसोलिडेट करना चाहेगा, और वहीं पर पंचाला प्राइड चाहेगा कि यहाँ पर इस लीड को बढ़ने न दिया जाए और इंश्योर करें कि इस लीड को
बूंद बूंद से अभी आप भर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है कि आप एक एक पॉइंट से, चाहे आप बोनस हो, टच पॉइंट हो, वहां से आप विपक्षी टीम को थोड़ा सा दबाव में लेकर आएं और इस लीड को यहां पर कम करें। और चलिए, परंतु कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री यहां पर करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके नवीन, एक बार फिर से आपका स्वागत है नवीन सेकंड हाफ में। Thank you, Harshit. Everybody watching this live on fan code all across the globe will be really happy to know that from tomorrow that the booster round second leg is all set to start, and more than anybody, Kaziranga Rhinos will be looking at that round because they've started to come back and fire in the right direction and at the right time. So this match, the first half, completely belonged to them as Mohit Kumar walks into the Rhinos' den with 21 and 13. I am somewhere fancying chances with the Kaziranga Rhinos will do it best, but not with such hasty tackles. Left corner, Mohit Narwal should have still stayed on. See, he went in. See, this is what I keep saying, Harshit. You can't go to a tackle when the raider has already started to go towards the midline. It's just that fraction of a second where, you know, you just need to hold back. If you had let the raider go, it would have just been an empty raid. बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, परंतु यहाँ पर मनु दर्शाते हुए कि वो स्किल्स यहाँ पर दर्शा रहे हैं और परवीन को शायद अपना शिकार बनाया है। परवीन जरूर नाखुश है, परंतु यहाँ पर अपना शिकार बनाते हुए नजर आए मनु। और देखिएगा इनमें बतौर रेडर, let's see in that replay, see what had happened as Manu was going in very deep. And the left corner was actually feeling that he had gone back, and Parveen there did not understand that the left shoulder's sleeve also was in touch or in connection with Manu's fingers. So there is where the players, as we always keep talking, Harshit, that we need to control our emotions and stop swearing on the mat. You can't just keep swearing on the mat. I think the defender has crossed the midline. I think the defender has crossed the midline there. So let's see what the decision is coming. I guess the raider will be safe. One ball. Yes, very well decided. And Rajesh Narwal has to go out in that attempt. Yeah, that is what it is. That is what it is. He crossed the midline, and very nice point for the Kaziranga. In fact, the Panchala pride on that previous occasion. Yeah, see, such errors will come in. And Arshit, what do you have to say about this counter dash? ये है फोर्स, ये है इस खिलाड़ी की ताकत। देखिए, जानते हैं, पहचानते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको, और शोल्डर को जिस तरह से उन्होंने ट्विस्ट किया, देखिए थोड़ा सा वहाँ पर जिस तरह से नवीन आप बड़ी कुशलता से समझाते हैं और कौशल यहाँ पर एक खिलाड़ी प्रतीक है, जिस तरह से उन्होंने अपने शोल्डर को वहाँ पर थोड़ा सा टिक किया और जानते थे उस फोर्स के साथ जिस तरह की फोर्स आप में राइनोज में देखने को मिलती है, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर प्रतीक दहिया टॉल रेडर हैं और जानते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ नवीन आपसे जानते हैं। Wow, that is just Mohit Kuldeep's brilliant, because see, he did not let the raider go towards the midline in an angle. So Mohit Kumar was somewhere late. He was not trying to go there. He was trying to go in for the kick, and that is the time where Mohit Kuldeep seized that opportunity. And that is what all the cover defenders do. You know, you take big names like Manjeet Chiller, Yuva Kumar. You take big names like them. What will happen is they will attack the raider when he is going in for the kick or the toe touch. See now, I am just watching what is happening on that left corner, Amit Nagar. When the raider is going in and trying to attack with the toe touch and the kick, what is Amit Nagar doing? See, he's just taking a small squat. He's just in the chain. Why can't you go and have that shock attack on the raider when he is on one leg? See, to try the toe touch, he has to be on one leg. To try the kick, he has to put his body weight on one leg. That is the weakest spot for any raider. That is the spot where it becomes very strong for a cover defender. Yeah, it's very minute details, but yeah, that is kabaddi. Yes, नवीन, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर आप जब वहां पर थोड़ा झुककर टो टच करने के लिए जाते हैं तब क्या एक एक्स्ट्रा माइक्रो सेकेंड ही आप कह लीजिए, परंतु वो रेडर को लगता है कि वहां से वो उठे और वापस जाए। यहाँ पर ये सुपर टैकल नजर आ सकता है। नंबर 5 जर्सी अमित नागर इस बार कहेंगे कि वो इंश्योर करेंगे कोई गलती ना करे। पंचाला प्राइड एक बड़ा सुपर टैकल है ये, क्या काबिल तारीफ नवीन, बहुत अच्छे अंदाज से। काबिल तारीफ। और मनीष गुलिया
This was nice, a double angle hold, agreed. But look at what Manish Gulia does after he just realized that Partik Daya did not cross the midline. He came in and took away that dangling left hand of Partik Daya. If not, it would have been curtains on Panchala Pride with an all-out. And I guess there is backtracking skills. I guess there was no all-out yet, isn't it, in this match? And even without the all-out, Kaziranga Rhinos have got more than around 10 points of lead. Substitution, Panchala Pride. बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी तक इस मुकाबले में हमें ऑल आउट जरूर देखने को नहीं मिला है और 8 पॉइंट की लीड यहाँ पर काजीरंगा राइनोस के पास है। परंतु नवीन, अब थोड़ा सा ध्यान मैं आपका पंचाला प्राइड की तरफ भी ले जाना चाहूंगा। आज मनीष गुलिया अच्छे नजर आ रहे हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आखिरकार उनमें वो जो कॉन्फिडेंस की कमी हमें बूस्टर राउंड के कुछ मुकाबलों में देखने को मिल रही थी, परंतु नितिन की यहाँ पर कॉन्फिडेंस उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इन पोजीशन पर हो, राइट कॉर्नर पर हो, लेफ्ट कॉर्नर पर हो या फिर बतौर रेडर हो, नितिन लगातार शिकार बने रहे हैं यहाँ पर काजीरंगा राइनोस के। See, that is what happens when you expect or give too much of a planning. See, it is good to have just one starter and one main course. But now, this main course is completely designed by the back hold of Hitesh. See how Manish Gulia was blinded. Look at that. He was completely blinded by Hitesh. He just went right behind him and covered him and said, okay, this is my opportunity. Let's make sure I utilize it to the full effect. And 10-point lead now and super tackle situation. Yeah, just talking about Nitin, I am really feeling bad or rather concerned about that youngster because he's not got a clear plan in his head. He's not been given a clear plan, I should say. Sombirji needs to talk to him as there is once again a running hand touch going across. And Parveen this time could not do anything because the raider was in good motion. बहुत सही तरीके से आपने बताया, क्योंकि परवीन के पास कुछ कार्य बचा नहीं था। वैसे भी वो चेन में नहीं थे, सोलो वहां पर मौजूद थे और अमन शर्मा को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जो पंचाला प्राइड के लिए आए थे उन्हें अपना शिकार बनाया है। डिफेंडर्स मौजूद थे और कोर्ट पर यहाँ पर देखिए काजीरंगा राइनोस के यहाँ पर कोच जरूर वार्तालाप कर रहे हैं। रिप्ले की बात करते हैं नवीन। This is the situation. There when he saw Manish Gulia, saw Partik Daya just touching the midline and not crossing it. That is the point which was so crucial to get that 2 points on the super tackle. But all marks for Amit Nagar. He's looked good today, and with Parveen along, what they'll have to do is, I guess Sombirji will be talking about the same thing. Go in, put out quick raids and come back. Take care in the super tackle. That is what would be the strategy. Will he do that, or will he want to be a hero? Is Amit Nagar? Why is he taking time? Why is he wasting secondages? Come back, brother. You'll have to come back soon. Or has he got some other intentions? Looks like he's got some other intentions. Will he go in? Tries to show some footwork. He could have come back, saved 10 more seconds. He could have really saved 10 more seconds. और देखिए अब प्रतीक भैया यहाँ पर जाते हुए और क्या यहाँ पर कह दिया प्रतीक चले जाइए। और अब महज एक खिलाड़ी मौजूद है, प्रयास जरूर करना चाहेंगे परंतु बड़ी आसानी के साथ। 3 बार उन्होंने बताया कि भाई हैंड फाइट करेगा, उन्होंने मना किया तो निश्चित तौर पर शोल्डर को टच किया और ऑल आउट। नवीन, आप मांग कर रहे थे कि अभी तक ऑल आउट नहीं हुआ है। काजीरंगा राइनोस ने आपकी बात सुन ली है, प्रतीक भैया ने आपकी बात सुन ली है। नहीं, मैं कुछ मांग नहीं कर रहा था। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं कुछ मांग नहीं कर रहा था। So sad of Panchala Pride. Come on, Harshit. I was just saying that it is nice that there is no all-out in this game. But evidently, what happened to Panchala Pride was, especially Parveen there, it was like you've gone to buy a vehicle and then on the outside it looks like a brand new vehicle coming in out of the showroom. But then you realize that it's a second-hand vehicle. That's what happened. The plan was right. When Amit Nagar went in for that raid, came back empty-handed, should have played in on that do-or-die raid situation, but somewhere Parveen stepping out of the end line was not expected. Now Partik Daya and a surprise attack comes in from the right end. Marvelously done. This is Mohit Kumar's brilliance in the tackle as well. And he used the blind spot of the right cover. Very nicely done. Look at that. Even the big Rhino, even though he was blinded, he pushed him away. But once again, I will give full marks to Amit Nagar, who came in for the support. As there is a do-or-die raid now, Harshit for Rajesh Sarwal. Why am I saying it's Mohit Kumar? मोहित कुमार, जी हाँ बिल्कुल, वहां पर मोहित कुमार शायद एक बार फिर से बोनस का प्रयास किया। पिछली बार जब ये डू और डाई रेड में आए थे बोनस जरूर लिया था, परंतु उसके बाद इन्हें
पिन डाउन कर दिया गया था और इस बार जरूर शायद पॉइंट लेकर आएंगे क्या अपनी टीम के लिए। पंचाला जी प्राइड। हाँ बिल्कुल, पंचाला प्राइड के लिए बोनस +1 पॉइंट, ये अच्छे संकेत हैं। The problem was what happened there is Mohit Narwal could not stop himself. See, I understand when you go full on for a dash, but then he did not expect Mohit Kumar will turn so swiftly. He had got the bonus which had saved him from the do-or-die raid, but then Mohit Narwal also said, let me give you one more point, and another block. Oh, this Amit Nagar, where was he? From which Nagar has he come to Panchala Pride's defense? Look at that for a strong block, and then also Nitin helping him in the ankle hold. Wonderfully executed combination tackle. But do you remember, Harshit, where was Amit Nagar before this? बिल्कुल देखिए अमित नागर, अब उनका कॉन्फिडेंस ही बढ़ रहा है ना। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे पहले कहाँ थे इतने समय तक, और क्या ये सारा खेल मानसिकता का है। एक टैकल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो वो मानसिकता एक अलग दर्जे पर पहुंच जाता है और उसके बाद आप अपने आत्मविश्वास पर जाते हैं, आपको अपनी स्किल्स पर ज़्यादा भरोसा हो जाता है। अमित नागर जैसे खिलाड़ी को यहाँ पर ढूंढ रहा था पंचाला प्राइड, और क्या अब वो अमित नागर जो अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं, अपने कौशल प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, वो अब आपको नजर आएगा नवीन। Yeah, and see what is happening is on the right corner we have Rohit Yadav managing the right corner, and once again this is going to be an empty raid from Naveen Narwal. We'll have to go back. So I'm still wondering what is the role of Nitin in the starting seven, because I really need to understand these lads have been given clear responsibilities by the think tank of their team. Manish Gulia will get this easy point. No problem at all from Naveen Narwal's tackle. But just talking about Nitin, let's come back to that discussion. It's very important because he's not been in any position. He's not been able to fire out from even the right in or even the in position. And now somewhere the right corner has been managed by Rohit Yadav. And we have a substitution which has come in. Sagar Ramesh comes in for the first time for Kaziranga Rhinos. तो चलिए एक डिफेंडर के चलते यहाँ पर सागर रमेश रेडर को बुलाया गया है। अच्छा कार्य यहाँ पर जगमल जी अक्सर करते हैं, परंतु अच्छे से याद आएगा, आप इस खिलाड़ी को नहीं भूल सकते हैं। चलिए आखिरकार यहाँ पर प्रदर्शन में आप अव्वलदान देख रहे हैं। रोहित यादव जिनके लिए पिछले 2-3 मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे, अब बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण समय में क्यों उन पे इतना कोच विश्वास जताते हैं, क्यों स्टार्टिंग 7 में उन्हें इतना मौका मिल रहा है, और अब ऑल आउट की तरफ धकेल रहा है काजीरंगा राइनोस को, और मनीष गुलिया देखिए दूसरी दफे में ऑल आउट नजर आया है। दोनों टीम अब एक बार ऑल आउट हो चुकी है। नवीन, अब आएगा इस मुकाबले में मजा, अब आएगा कबड्डी का खेल का असली जज्बा जोश। बेहतरीन कार्य, no doubt about that at all. And Manish Gulia has agreed completely to whatever the coach has said, and he's executed it very, very brilliantly. And especially putting that block into a nullifying effect, where he just blocked the defender with an anti-hold that came in from his right hand. Manish Gulia showed that he can also push out the raider and go towards the midline. Very nicely done. All out inflicted. Now Sombir ji will be really happy to discuss a lot of things with his lads, as Jagmal ji, the coach of Kaziranga Rhinos, is trying to give it. So this is what we are trying to say, where the 3 points is so important as a lead, or probably this coming back on Kaziranga Rhinos to dissolve the deficit. That is really important. That is what would have been the clear indication from the coach. Let's see what the Panchala Pride defense does. But I'm happy that Rohit Yadav has gone into that right corner, Rashid, because he at least is performing very nicely and he knows what he has to do. And Parveen is holding himself back. He should hold back. Oh, well done. Well, Partik Jaya is actually appealing. No, the referees does not agree. Referees does not agree. Can Partik Jaya get a card? Will he be getting a card? No. This appeal can be just an appeal. It should not be an argument. बिल्कुल, और अच्छा लगा शायद प्रतीक दहिया ने पिछले अपने कुछ कार्ड से संभला है, और जिस तरह से हमने लगातार ग्रीन कार्ड के बारे में बात की, ये क्या ग्रीन कलर चमक पाएगा। मनीष गुलिया एंड लाइन को शायद माफ कीजिएगा, मिड लाइन को शायद क्या टच किया था, परंतु क्रॉस एक बार फिर से नहीं कर पाए थे। बहुत अच्छा वेस्ट होल्ड
बल्कि मोमेंटम मनीष गुलिया का मिड लाइन की तरफ था, उसके बावजूद वहां पर जिस तरह से हितेश का वो वेस्ट होल्ड था, बैक होल्ड था, बहुत ही अच्छा था नवीन। No, he was. Yeah, Harshit. No, he was not trying to go towards the mid line. Let me also go ahead and correct you that he was just keeping his legs away. So you are doing that for the second time, and that is the second time where Hitesh is going on top of you and being successful in doing your getting your back hold. So what is happening is, if you be away from the left corner or the right corner defender, keeping your legs away, but this time you cannot keep the legs away from Rohit Yadav. Amit Nagar and Rohit Yadav, these are the two proper defenders for Panchala Pride who are firing in unison. And look at this combination from them once again. Rohit Yadav diving ankle hold. And see, just talking about Manish Gulia, what he did on both occasions was that he is trying to be away from Hitesh, keeping his legs away. So what is happening is, on that occasion, Hitesh is going behind him. You know, very, very intelligently, he is trying to blind out Manish Gulia on two occasions. And he was successful in doing that. So Manish Gulia now should probably go towards Hitesh and, try and not make him come behind him. वाइज एक्सप्लेनेशन, बहुत ही चतुरता के साथ आपने इसे बताया नवीन, और यही बारीकियत है ना कि बहुत कुछ लगातार आप बारीकी से वहां पर पढ़ लेते हैं, और मुझे लगता है कि आपका क्या एक ह्यूमन माइंड है या फिर सुपर ह्यूमन माइंड है नवीन। निश्चित तौर पर मैं चेक कराना चाहूंगा आपके माइंड को, पर जिस अंदाज में जस्ट कबड्डी माइंड। और यहाँ पर देखना होगा मनु प्रतीक दहिया को, थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छी बात है कि चलिए वो जो मोमेंटम है वो वहां पर लगातार पंचाला प्राइड यही प्रयास कर रही है, और जिस तरह से मनु हमने बात की। Yeah. Now let's see what Manish Gulia will do. See, he's going away from Hitesh once again. This is nice. He's going into attack. Ankle hold. That's okay, but he comes back into the midline is what I'm feeling. Look at that. Yeah, brilliantly done. And I am really happy that he corrected himself immediately. He went in towards Hitesh, but this time did not allow Hitesh to come behind him. That's why Hitesh went to the ankle hold instead of the back hold. And then the support also came in. I guess this is 3 points for Manish Gulia. Hitesh has to go for sure. And I think it is the left cover, Naveen Narwal. But let's see what the referees have to say. Very crucial raid. मनु को भी शायद वहां पर अपना शिकार बनाते हुए नजर आएंगे। ये लीजिए, मनीष गुलिया कर रहे हैं वापसी, और इसके लिए वो तैयार थे। मनीष गुलिया इसके लिए तैयार थे, और जिस तरह से आपने बताया कि देखिए टूवर्ड्स गए, उनकी दिशा में गए, और उसके बाद उन्होंने अपने पैर को छलकाया बड़ी ही बारीकियत के साथ, बड़ी ही नजाकत के साथ, और उसके बाद मिड लाइन की तरफ जाकर अपना सुपर रेड किया है। ये अब स्कोर लगभग बराबरी की तरफ बढ़ रहा है नवीन, और एक्साइटमेंट अब बहुत ज्यादा सर चढ़ता हुआ नजर आएगा। 34-32 रमेश थोड़ा सा पॉज लिया, और जिसके चलते बैक दिखा दी, और ये एक और बार पंचाला प्राइड के डिफेंस में अमित नागर, परवीन और यहाँ पर रोहित यादव की जोड़ी 34-33 का स्कोर हो जाएगा। एक बार फिर से वहां पर अब आपको डिफेंडर पंचाला प्राइड के लिए कौन नजर आए? मोहित कुमार। And I'm really wondering to see why actually Manu stopped, and he was actually stopped, and he looked freezed in that lobby. He shouldn't have done that, but now super tackle situation on. Manish Gulia will love this, as he's got only 2 men to contend with. Mohit Kuldeep is there, and he will go in and attack. This is pacey raid. 1 point for sure, and Mohit Kuldeep will be wondering what just happened. Look at that, he is there to go for the dash, but he did not get any angle whatsoever, because Manish Gulia went in like a rocket towards the other end, and this is in a very, very long time. I haven't seen Manish Gulia go with such a rocket speed in a raid. That is nice to see, as we got that equalizer. Now last man standing for Kaziranga Rhinos. लास्ट मैन स्टैंडिंग है 10 नंबर जर्सी मोहित कुलदीप प्रयास करेंगे, और लीजिए आप काजीरंगा राइनोज को यहाँ पर बड़े ही कम अंतराल में, बहुत ही कम मिनट्स के अंतराल में पंचाला प्राइड लगातार दूसरी बार ऑल आउट कर देगी। ये काजीरंगा राइनोज वो नहीं है जो आपको सर्वाइवल राउंड में नजर आई थी। क्या लॉबी में यहाँ पर थे? Yeah, Mohit Kuldeep could not control himself. Of course, yes, he's a defender. Cannot be expecting more of him in a raid with a lot of strategies around. But all out, now Panchala Pride is leading this by 2 points, and it is all down to the defense now. The Raiders will do their job, no problem whatsoever, as the outward turn has come in. Is the hand going in? No, raided out. Mohit Kumar was gushed out by the right cover.
of the Kaziranga Rhinos. Look at that. It was Mohit Kuldeep once again. So Mohit getting Mohit, and the outward turn also did not help. So just 1 point lead. Now, Harshit, if Panchala Pride lose this game, I should say this, it's because of the defense. Let's see what happens. They will not let him go. और नवीन, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर मुकाबला हारेगी तो भी अपने डिफेंडर्स के चलते, और अगर अपना मुकाबला जीतेगी तो भी उसमें डिफेंडर्स का एक बहुत बड़ा कार्य रहेगा। देखिए, लगातार प्रतीक दहिया को शिकार बनाना। देखिए, हमने जो दो पिछले ऑल आउट देखे नवीन, उसमें क्या हुआ है, प्रतीक दहिया को रिवाइवल नहीं मिला है, जिसके चलते काजीरंगा राइनोस 2 बार लगातार ऑल आउट हुई है, और एक बार फिर से पंचाला प्राइड ने वही कार्य किया है। क्या किया, बोनस भले ही दे दिया हो काजीरंगा राइनोस और प्रतीक दहिया को, परंतु धरा दबोचा है, पिन डाउन किया है, चारों खाने चित किया है। और कैसे किया है, डिफेंस के पूरे संतुलित से, कॉम्बिनेशन से। परवीन का और रोहित यादव का फॉर्म में आ जाना, अमित नागर का फॉर्म में आ जाना, ये बहुत अच्छे संकेत है पंचाला प्राइड के लिए। Oh, this is looking like a very, very different Panchala Pride than what we have seen. And I guess, Harshit, you lost out on all the superlative terms to explain that defense. I guess we'll have to go back to your, Hindi dictionary and find out something else for this tackle. Oh my God! What is happening here? Panchala Pride playing a bow. And somewhere it was as if the defenders were also saving themselves from getting into the midline. Yes, the block was right. Yes, the attack was right. And then what has happened? What has happened there with Rohit Yadav? He was so quick. He was almost stepping out of the midline and then controlled himself using the lobby. Yes, the lobby would have been activated even when the raiders and defenders there came in contact. But, they are hungry. They look really lethal and hungry, this Panchala Pride today in the defense. क्या बिल्कुल उसी तरह से पंचाला प्राइड अब नजर आ रही है नवीन, जिस तरह से हमने उन्हें सर्वाइवल राउंड के अंतिम मुकाबले में देखा था। उनके लिए जो जीत की भूख थी ना नवीन, वो आज मुझे पंचाला प्राइड में नजर आ रही है। परंतु अभी भी 2 मिनट 10 सेकंड का अब लगभग समय शेष था। सागर रमेश गए हैं, जल्दी वापस आए हैं। क्या डू और डाई रेड का इंतजार कर रहे हैं? जी आ गई है डू और डाई रेड, रोहित कुमार आ गए हैं। See, now when the defense is actually doing so very well, the raiders of Kaziranga Rhinos will go and put empty raids. And in a two-order raid! What a raid! What a raid by Mohit Kumar! Take that! And this is somewhere what the Kaziranga Rhinos did not want to happen. Hitesh once again not going full-fledged with the dash, and the angle of Mohit Kumar actually backtracking and falling on the lobby, getting full effect to get him 2 points. That's okay. Panchala Pride will not be bothered about the bonus. Now it's a super tackle situation. Chalo, says the referee. If there is 3 or less than 3 men, it's going to be 2 points. And Mohit Kumar, Harshit, I'm sure. You tell me what's going to happen. Is it a super tackle or 1 point to Panchala Pride? मेरे मुताबिक नवीन ये एम्प्टी रेड हो सकती है, एम्प्टी रेड। Oh, should not be. Let's see. Let's stop talking. It's definitely not an empty raid. And it's a super tackle. Kaziranga Rhinos come back into this match through Naveen Narwal's beautiful block. And they have utilized the lobby. The defenders have utilized the lobby to keep Mohit Narwal down. Wow. This is going down to the wire, this match. And in a very, very long time, Harshit, especially in the booster round, we haven't seen a fight that has been put up. And this is the fight that we want to see. No matter who wins or loses, we want to see a fight in the game. और वो फाइट देखने को मिल रही है इस बार। प्रतीक दहिया फिर से, ये है कवर कॉम्बिनेशन। अमित नागर हो, लेफ्ट कॉर्नर पर परवीन हो, राइट कॉर्नर पर वहां पर रोहित यादव हो। प्रतीक दहिया का आज लगातार शिकार करते हुए नजर आया है। Just see Mohit. And also there's a big surprise. Actually, there's a big surprise. From the right cover, it was Aman Sharma, the substitute, who was substituted on number 10 jersey. He came in the place of Nitin. So if you see, there is no Nitin on the court. Just watch that out, because Nitin did not understand what to do today in today's match. He was all over the place, and Sombirji rightly substituting him and putting in Aman Sharma onto that right cover position. He said, okay Rohit Yadav, tu right corner dekh le, Aman Sharma tu yahan pe aaja right cover pe, and look at the change. This is marvelous. Not required. Why do you have to do that? Is Amit Nagar, you have done so very well
Every single point matters, my dear. This is not what you need to do. शायद एक ही पॉइंट देना चाहते थे, परंतु क्या इतना जल्दी हाँ। नहीं होना नहीं होना चाहिए था। नवीन और बॉक लाइन पे खड़े। अब देखिए क्या होगा, अगर कैसे भी ये बॉक लाइन को पार कर गए तो शायद अब ये मुकाबला क्या समाप्ति की तरफ है। क्या पंचाला प्राइड को आप एक जीत देखते हुए नजर आ सकते हैं? बॉक लाइन क्या पार किए नवीन, आपके नजरों में क्या नजर आया आपको? Yeah, I guess. The defense went to put in that final effort, but 2 points for Manish Gulia. Really well done. I loved what the defense also did for Kaziranga Rhinos, especially Mohit Kuldeep and Naveen Narwal. They tried to nab out and at least get a tie out of this match for Kaziranga Rhinos, but no. Panchala Pride will only give away 1 point. Nice to see only one defender going in, and all praises there for Rohit Yadav. The coach of Kaziranga Rhinos is really unhappy because they really wanted to win this match and they were very, very hungry to win. Yeah, I understand Jagmalji, the disappointment is there on the face, but लड़कों ने अच्छा खेला आज. चलिए इतनी बुरी तरह से तो नहीं हारे, 1 पॉइंट तो मिलेगा इस मैच से, but 44 for Panchala Pride. Ashit, this is the way the defense is fired in unison, and check that out. I will love this. No defender has got a high five. I like saying this. No defender has got a high five, but every defender has got a point. See, 2 points for Mohit Kuldeep, 2 points for, in fact, correction, yeah, 2 points for Rohit Yadav, 4 points for Amit Nagar, 3 points for Mohit, and 3 points for Parveen. So, defense like this is nice. I do not want to see high five. I want to see everybody contributing. और इसी के चलते पंचाला प्राइड, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर एक डिफेंडर ने वहां पर प्रदर्शन किया है और इसी के चलते जीता है यहाँ पर, क्योंकि आप किसी भी एक खिलाड़ी से वहां पर जीतेंगे नहीं, आपको अपनी टीम को प्रदर्शन करना होगा। और देखिए वहां पर बताना चाहेंगे मनीष गुलिया ने 18 पॉइंट प्राप्त किए, नवीन और मोहित ने भी 10 पॉइंट। Yeah, let me tell you one more line here for the Panchala Pride win. It is a pride win. It is just not a win. It's a pride win because they have really earned this win. It is like earning something that you deserve for, and today they have earned it. It is not by the opposition's error. It is not by easy raid points that you have got, because even the defense of Kaziranga Rhinos has done really well, and to win this match by just a couple of points, this shows the high level of Kabaddi here in Yuva Kabaddi series, and I love to see all such games, all such teams play to such effect. You know, and this was marvelous. Rohit Yadav was actually stepping out of the midline. He was so very curious in blocking the raider. He himself was able to cross the midline, and I'm happy, really happy to see such a match. I am somewhat disappointed for Kaziranga Rhinos, but even they take up 1 point from this match. This is what we want to see in Yuva Kabaddi series, and we do not want to see Periyar Panthers-like team winning with big matches, big score differences. Yeah, even that is fine. That shows their skills and talent. But this match, hats off, and for me, I should say Kabaddi is a winner in this match, because look at that rate point, almost similar. Look at tackle points, almost similar. Look at all out points, almost similar. What is gone in the Panchala Pride way is only the combination of the tackle. Oh, every defender has won a point, and this is a hats off match in the booster round. सच में बिल्कुल सही कहा नवीन कि इसमें किसी टीम की जीत हो या ना हो, कबड्डी की जीत जरूर हुई है, और उससे क्या यहाँ पर फर्क पड़ा है। देखिए दूसरी जीत पंचाला प्राइड को मिल गई है। काजीरंगा राइनोस अभी भी अपनी सिर्फ 1 जीत के साथ वहाँ पर सेकंड लास्ट पोजीशन पर मौजूद जरूर है। पंचाला प्राइड भी वहाँ पर 2 जीत जरूर उन्होंने प्राप्त की है। अगर काजीरंगा राइनोस जीतता तो वो पंचाला प्राइड से ऊपर आ जाता, परंतु पंचाला प्राइड सेम पोजीशन पर मौजूद है और उनका पॉइंट्स पर मैच में थोड़ा सा आपको इंक्रीज देखने को धीरे धीरे मिलेगा। और पंचाला प्राइड में आपने बिल्कुल क्या सीधे सीधे शब्दों में कहा कि ये उनके लिए प्राइड मूवमेंट है, ये उनके लिए प्राइड मैच था, क्योंकि डबल डिजिट्स में लीड थी वहां पर काजीरंगा राइनोस के पास, और उन डबल डिजिट्स लीड को इन्होंने पूरी तरह से तहस नहस किया, अनसेटल किया। और आज की बात कर लेते हैं डे 7 की। नवीन आपसे जाना चाहेंगे। Yes, definitely. What a match. The 2-point match was marvelous, as Muttal Magnets now have another opportunity against the Maratha Marbles, who are doing well.
and also at 8 p.m. we will be seeing Aravali Arrows taking on the Hampi Heroes. So two more exciting matches coming up, and hope that every team plays high standard kabaddi like what Kaziranga Rhinos and Panchala Pride have given us in this match that we just concluded with. Thank you so much, Arshid. It was also very enjoyable that talking to you in the commentary box. So see you soon, everybody, at 6 p.m. coming up. Match number 72 on Fan Code. I am Navin Chori signing off. Alongside with me was Harshit Sharma. Thank you so much, everybody.